So, hello everybody. Today we will be doing a question number 2337, move pieces to obtain a string. In this question, we are given with some certain rules to solve the question. So, let me just read for you guys. Here it is given that we have two strings named as start and target, which is of length n, where L represents the left and R represents the right, right? And if we have space in left, we have to move a blank space. In left, we have to move left, and if there is any blank space, uh, we can move right at that case if R is written there, right? And we have to move till start equal to target. मतलब स्टार्ट और टारगेट जब तक सेम नहीं हो जाता हमें उसको मूव करना पड़ेगा, राइट? अब एग्जाम्पल से समझते हैं पहले, ठीक है? हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा था स्टार्ट इज इक्वल्स टू दिस एंड टारगेट इज इक्वल टू दिस, तो क्या हम इसको इसके बराबर ला सकते हैं? एज एल हमारे पास है एंड हमारे पास लेफ्ट में ब्लैंक स्पेस भी है, तो हम इसको मूव कर देंगे तो एल इधर आ जाएगा, जो कि इधर आ गया, स्पेस भी है। अब सबसे पहले इस आर को हम राइट शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे शिफ्ट, फिर ये वाले आर को इधर और इधर शिफ्ट करके देन हमारा जो फाइनल टारगेट आ सकता है वो ये आ सकता है, तो इसलिए ट्रू आउटपुट आया। बट इन केस ऑफ दिस सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्ट दे रखा था इतना, टारगेट दे रखा था इतना, आउटपुट फॉल्स कैसे आया वो देखते हैं। अब हमारे पास आर दे रखा है तो हम राइट मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम आर यहाँ पे लेके आए, अब एल है, क्या हमारे पास ये स्पेस खाली है? नहीं, यहाँ तो आर आ चुका है, तो वो मूव ही नहीं कर सकता। अब मूव नहीं कर सकता तो ऐसा तो नहीं दिखेगा ही, ये तो आर एल हो जाएगा और यहाँ पे तो एल आर है, तो इसलिए फॉल्स है, राइट? यही आपको एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे जहाँ पे आपका स्टार्ट ये है एंड टारगेट ये है, इस केस में हमें टारगेट को चेंज नहीं करना, हमें स्टार्ट को चेंज करना है ना। तो आर है, अब राइट साइड तो कोई ब्लैंक है ही नहीं हमारे पास, तो हम मूव ही नहीं कर सकते, तो ये स्टार्ट एंड टारगेट इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए जो आपका आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, राइट? नाउ कोड करके देखते हैं इस चीज़ को। हमारी अप्रोच यही रहेगी कि हम सारी जगहों को पहले आइट्रेट करके देखें एंड उसमें देखें कि हमारी जो आई की वैल्यू है, लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट की। तो जो आई की वैल्यू है वो स्मॉलर है, जे की स्मॉलर है, अगर है तो स्टार्ट ऑफ आई क्या ब्लैंक है, क्या टारगेट ऑफ जे ब्लैंक है, और उसी हिसाब से हम रिटर्न ट्रू फॉल्स करेंगे। और सबसे ऑप्टिमल अप्रोच का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं विच इज n एंड यहाँ पे हम उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, करेक्ट? ओके, स्टार्ट की। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे आई, उसको इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से एंड जे को भी इनिशियलाइज कर लेंगे 0 से, राइट? इतना ठीक है। अब एक वाइल लूप लेंगे जिसमें आई स्मॉलर देन n और j is smaller than n. Any one condition if it follows, then again a while loop where I is smaller than n and start of I is equals to the blank space, right? The blank space. Okay, if both the condition is true, then we have to increment I, right? We have to increment I. But in case suppose I have this condition true where j is smaller than n and target of j is equal to blank, right? Is equal to blank. Yes, blank. In that case we have to increment j, correct? Okay, clear. After this we have to apply another loop which is a if else loop, right?
where we have to write a condition if I is equal to n or j equal to n. This might be a case, right? So in that case we have to return both of them. So in that case we have to return I equal to j and j equal to n, right? Okay, but what if our start of I is not equals to target of j? This might be happening, right? So we have to write another case for that, where start of I is not equal to your target of j, right? Target of j. Okay. In that particular case, what we have to return is we have to return false. Okay, understood. Okay. Another condition. Which condition? So if our start of I is equal to left and your I is smaller than j, in that case also we have to return false ना. Suppose हमारे पास L दे रखा है पर हम उसको लेफ्ट में शिफ्ट ही नहीं कर सकते, तब भी तो हम क्या कहते हैं रिटर्न फॉल्स करेंगे ना. तो वो वाली कंडीशन भी हमको लिखनी पड़ेगी जहाँ पे आपका ये लेंथ लेफ्ट है and your I is smaller than j. In that particular case also we have to return false. Okay. Okay. Now one more condition. Now you might be thinking which condition I am talking about, right? So we have to remember this also, that if our start of I is equal to right, but in sorry, case of I is greater than j, in this case also we have to return false कि हमारे पास right r दे रखा है पर राइट करने के लिए स्पेस ही नहीं है. सो उस केस में भी तो हमें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा ना. अगर any of the condition we write is not like applicable या फिर वो condition satisfy नहीं कर रही कोई भी if while loop में, then we have to increment I and increment j, right? And at last what we have to return is to return true. Cool. Okay. अब सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, that is this is the most optimal way of solving this question, right? Okay. Also, if I'm asking you about the time complexity, so can you guess the time complexity used in this particular question? So if not, here 0 of n is our time complexity, and if I'm talking about the space complexity for this particular question, it would be 0 of n. Sorry, 0 of constant time operation. Okay, so yeah, that's about this question. Let's run the code and hope we will be able to pass all the test cases. Okay, so there's one error. Okay, the spelling of length is. So yes, our solution is accepted. If you guys have any doubt regarding this question, you can leave a comment. I will try to reply as far as possible. Also, please subscribe to our channel and like our videos. Thank you so much.